और आज की बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आज बढ़ गए हैं। पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, डीजल की कीमत भी 70 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। और इस तरीके से पिछले 8 दिन की अगर हम बात करें तो ये दाम 4 रुपए 90 पैसे तक hiked by 80 paise today, leaving consumers with a hole in their pocket. हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर। सो हम सब परेशान हैं बढ़ते हुए पेट्रोल की प्राइसेस से एंड राइडिंग फोर व्हीलर्स हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। लाइक आई ट्रैवल टू माय हॉस्पिटल डेली फॉर अराउंड 40 किलोमीटर्स टू 60 किलोमीटर्स एवरी डे। सो बजट बढ़ता जा रहा है हमारा मंथली विथ इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइसेस। सो पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस तो कम होने वाली नहीं है बिकॉज वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स एंड ग्लोबली पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। सो टू बीट दिस पेट्रोल प्राइसेस वी हैव टू लुक फॉर सम अल्टरनेटिव ऑप्शंस लाइक साइक्लिंग। सो साइक्लिंग टू वर्क प्लेस इज a beautiful option if you are staying very nearby to your workplace. But in my case, I travel 20 to 60 kilometers every day to my workplace. So every day going in cycle is not practically possible with Indian roads. But I do travel in cycle to my workplace in winter for almost 15 days. So I will share that vlog in my upcoming vlog where how I travel to my workplace for 15 days in cycle. So there are other options like electric vehicles, although it is very eco-friendly, good alternative to fossil fuels, but the issue is of new technology and very high cost of the vehicles, although the government is trying to give subsidy on the electric vehicles. Guys, now I got an option. So पिछले 1 साल से मैं अपनी बैलेनो एक अल्टरनेटिव फ्यूल से पे चला रहा हूँ, that is on CNG. So this car is BS4 petrol and I am running on CNG. So CNG is very eco-friendly, value for money and very cleaner fuel than other fossil fuels. So let me tell you the benefits and disadvantages of CNG. Since 1 साल से मैं अपने बैलेनो को CNG पे चला रहा हूँ and it's a very good, clean and very value for money option if you are having a petrol engine. CNG stands for compressed natural gas. It's a natural gas which is compressed and transported in pipeline. So ये हमारे इंडिया में बहुत प्लेसेस में अवेलेबल है, लाइक इन दिल्ली। सो दिल्ली में CNG होने के बाद पोल्यूशन बहुत ही कम हो गया है एंड आपके यहाँ गुजरात एंड महाराष्ट्र, राजस्थान में वेरी वाइड नेटवर्क वी हैव एंड इन उड़ीसा भुवनेश्वर में भी अभी प्रेजेंटली बहुत सारे CNG पंप्स हैं। सो इफ़ यू आर स्टेइंग इन भुवनेश्वर फॉर ए सिटी राइड, इट इज़ बेटर टू कन्वर्ट टू CNG टू get a very good mileage and very economical deal. तो अभी जानते हैं हम CNG के फायदे। तो CNG एक क्लीन फ्यूल है and it emits less emissions unlike petrol and diesel. तो इसमें the carbon footprint is very less and less polluting and this is very economical. The price of CNG in Delhi is around 50 rupees per kg and in Bhubaneswar it is around 78 rupees abhi currently, and which is also increasing no doubt. So it is still economical than petrol and diesel and mileage बहुत अच्छा है. So mileage in my case I am getting almost 32 to 35 kilometers per kg and the running cost of CNG is around 2.5 rupees to 3 rupees per kilometer, but in petrol जब मैं पेट्रोल में चलाता हूँ it is coming around 5 to 6 rupees per kilometer. So you can imagine मैं डेली 60 किलोमीटर चलाता हूँ and my daily saving is around 3 to 4 rupees per kilometer. So good thing about CNG in a petrol engine is that the benefit of flexible dual fuel options. Suppose if you are running short of CNG, then immediately you can switch over to petrol. Another big advantage of CNG is cleaner engine.
and because of less carbon emissions, the engine remains very clean and smooth. So I'm driving this car and it is very smooth since 1 year. There are some speculations about the safety of CNG, but CNG, as per PCRA and petroleum research organizations, CNG is very safest because of its high ignition point. It is not inflammable. Even if it leaks, it doesn't catch fire immediately like petrol. So ये रहे CNG के फायदे. अभी हम जानेंगे CNG के disadvantages. Like any product has advantages and disadvantages, so CNG also has some disadvantages and we have to outweigh what is suiting yours. So CNG का सबसे biggest drawback है its availability, limited availability, because अभी इंडिया में ये अवेलेबल है बट ओनली इन मेट्रोज एंड सिटीज. सो बट इन गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड राजस्थान में आपको हर शहर में मिल जाएगा, बट इन अदर सिटीज इट इज अवेलेबल इन ओनली इन कैपिटल सिटीज. लाइक आई स्टे इन भुवनेश्वर, यहाँ पे वाइडली अवेलेबल है. सो दैट्स वाई इफ यू आर स्टेइंग इन ए सिटी वेयर देयर इज अ वाइड नेटवर्क ऑफ सीएनजी पंप्स, तो आप बिल्कुल इसको चेंज कर लीजिए. बिकॉज आई एम नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन अवेलेबिलिटी इफ आई एम ट्रैवलिंग इनसाइड भुवनेश्वर. आई हैव सफिशिएंट पंप्स टू कैटर दिस. Another disadvantage of CNG is it is consumes the only available boot space of your car, because the CNG is stored in a very large cylinder and ये आपके boot space का around 60% consume कर लेगा. तो since Baleno has a very good boot space, so I am left over with reasonable decent boot space left, where I can keep some of my bags when I travel outside with family with a spare tire. Another disadvantage of CNG is the issue of little decrease in pickup. So if the engine size is less than 800cc or 1000cc, you will feel some loss in pickup. But my engine is 1.2 engine, so I'm not feeling any dragging issue or loss in pickup. So there is a option of putting an advancer in a smaller engines. उसमें आपको pickup बढ़ जाएगा if you put advancer. But in my case there was no need to put any advancer since I was not having any issue of loss in pickup because my engine is 1.2 engine. So the pickup, the performance and the mileage is much better, unlike I was using petrol before. Now let's see how a CNG kit is installed on your existing BS4 petrol engine. मैंने अपनी CNG किट इंस्टॉलेशन डिवाइन फ्यूल सर्विसेज भुवनेश्वर से कराई थी एंड ये एकमात्र RTO अप्रूव्ड CNG किट एजेंसी है. दिस इज ए गुजरात बेस्ड कंपनी. दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड हैव ए वेरी साउंड नॉलेज ऑन CNG किट इंस्टॉलेशंस. और ये है बैलेनो का बूट स्पेस आफ्टर रिमूवल ऑफ द टायर एंड यहाँ पे द सिलेंडर विल बी फिटेड. CNG किट लगाने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे. There are two types of CNG kits. One is sequential and another is Venturi. Sequential kit is best and little priced, but it is best to install as it's sensor based and has computer unit to control the right amount of gas to go inside the engine. Are some brands of CNG kits: BRC, Mijo, Tomasito, Lovato, Motogen, and they are mainly imported from Italy. But I have chosen BRC and it is imported in India by Rohan BRC. अभी एक ब्रांड न्यू CNG किट का अनबॉक्सिंग करते हैं. चलिए देखते हैं CNG किट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. दिस इज PRV, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व और सिंपली ए CNG किट. दिस इज डक्टिंग पाइप. दिस इज हाई प्रेशर पाइप which carries gas to and from the cylinder. These are low pressure pipes which carry the gas from gas kit to engine in very low pressure. This is a compliance plate which mentions all the details of kit and cylinder and need to be fixed to the vehicle.
This is ECU, Electronic Control Unit, or brain or computer of the CNG kit, which helps in controlling the right amount of gas going into the engine. This is injector rail, and as Baleno has 4 cylinders, so all the 4 rail injectors will be used. If it is a 3 cylinder engine, one will be left free. This is pressure gauge, which measures the right pressure in the cylinder. ये है हाई प्रेशर सोलोनॉइड. इसका काम जैसे इंजन बंद हो जाता है इमीडिएटली गैस की सप्लाई बंद कर देता है. एंड दिस इज़ द फिलिंग वाल्व. इसके थ्रू में ही गैस भरी जाती है CNG पंप में. प्लीज़ लुक फॉर द होलोग्राम इन द ECU टू चेक फॉर इट्स जेन्युइनिटी. ये है संतोष भाई. He is very professional and sound in CNG technology. He is trained in Gujarat, where it is hub of CNG vehicles. हमारा CNG किट ऑलमोस्ट लग चुका है. अब सिलेंडर की बारी है. Total cost of CNG retrofitment varies from 35,000 to 50,000, out of which the cylinder cost is almost 30 to 40%. Please ensure the cylinder is from fresh stock and certified by Petroleum and Explosive Safety Organization (PESO). There are many CNG cylinder brands available, and Rama is one of them. It is mandatory to hydro test each and every cylinder every 3 years. Now let's know how CNG runs your car. फास्ट बनेट खोलला पर फिलिंग वाल अच्छी फिलिंग वाल पर हमर पिन टाको काटला पर एठी से गैस फिलिंग करा एठी गैस फिलिंग वाला पर यार बैक साइड रे जो पाइप अछि पछवड़ जाकी टाकी रे फुल हबो सेठी 200 प्रेशर फुल होला पर तापर कोनी अपन जतने गाड़ी स्टार्ट करिवे से गैस रिटर्न आसे कि हमर 220 बार रे एंट्री करिवा हमर PRV जोटा हमर किट को आ जाय PRV रे एंट्री कला पर PRV रो जतने आउटलेट हबो सेटा 5 बार प्रेशर आउट है कि लो प्रेशर पाइप द्वारा आम इंजेक्टर रेल को आस इंजेक्टर रेल रे पुणी 0.5 बार प्रेशर आउटलेट इंजेक्ट करके आम इंजिन में बस दैट 5. Just before starting of the engine, the final calibration and tuning with the help of laptop to realign the ECU of the CNG kit. And this is how we fill CNG at CNG pump. The greatest mileage I got on a long drive when I went to Visakhapatnam from Bhubaneswar on winters, when I filled the tank full, which was showing 4 green lights. At 246 kilometers, the CNG cylinder came into reserve. That means one green light was blinking with 2 kg gas remaining. At 320 kilometers, the CNG was completely exhausted, and which was alarmed by a beeping sound, and it converted into petrol without stopping the engine. So I got a fantastic mileage. I drove 320 kilometers on 9 kg CNG gas. And that's the available boot space after the cylinder and the spare tire. To legalize your CNG retrofitment, please do endorse your CNG fuel type in your RC book, and also intimate the insurance company so that they will change the fuel type, so that you will not have any problem during your claims. If you are staying in a city, if your travel distance is daily around 40 to 50 kilometers in city, and if you are having a BS4 engine, then you should seriously consider retrofitment of CNG on your existing petrol engine, where you can save your valuable money for a greater and cleaner environment, and for the decrease of import cost on our nation's exchequer, because the natural gas is much cheaper than petrol to import. So guys, please consider retrofitment of your existing BS4 petrol engine to a cleaner CNG option. Thank you.
Please ensure the retrofitment is done only at RTO government approved centers to prevent any faulty installations. Thank you.